So hello friends, welcome back to our YouTube channel Medicine. Today we are going to study about the beta blockers, its receptors, classification, uses, side effect and contraindication in animated way. Okay, so first, this is our human heart. Okay, in our human heart, which beta receptors are present? So that is beta 1. Okay, and this beta 1 receptor are more present in ventricles as compared to आर्ट्रियम ओके आर्ट्रिया से ज्यादा वेंट्रिकल में बीटा रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है इफ देयर इज डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट व्हाट हैपन अगर कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा ब्रेन के अंदर ब्लड कम जाएगा अगर ब्रेन के अंदर ब्लड कम जाएगा तो ब्रेन बोले मैं तो आपकी बॉडी को संभालता हूँ अगर मुझे ब्लड कम मिलेगा ऐसा थोड़ी चलेगा तो व्हाट आवर ब्रेन डज आवर ब्रेन डू स्टार्ट स्टिमुलेटिंग सिंपैथेटिक आउटफ्लो ओके वो सिंपैथेटिक आउटफ्लो को स्टार्ट कर देगा सिंपैथेटिक आउटफ्लो स्टार्ट होगा उसकी वजह से क्या होगा इट कॉजेस रिलीज ऑफ नॉन एड्रेनालिन एंड एड्रेनालिन इन अवर ब्लड सर्कुलेशन अगर नॉन एड्रेनालिन एंड एड्रेनालिन इंक्रीज होगा उसकी वजह से क्या होगा अवर हार्ट स्टिमुलेट एंड इट कॉजेस टैकीकार्डिया okay it causes tachycardia now in our lungs which beta receptors are present so that is beta 2 receptors now these beta 2 receptors what it does it causes bronchodilation beta 2 receptor क्या करेगा bronchodilation cause करेगा जिसकी वजह से our जो bronchus वो डायलेट हो जाएगा अब हम अस्थमा का जो पेशेंट होता है उसको हम बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट ड्रग्स देते हैं लाइक साल्बुटामोल ये साल्बुटामोल क्या करेगा साल्बुटामोल इस बीटा 2 रिसेप्टर पे आके उसको एगोनिस्ट एक्टिविटी दिखाएगा और उसकी वजह से क्या होगा ब्रोंको डायलेशन नाउ similarly in our blood vessels beta 2 receptors are present and these beta 2 receptors what they does they causes vasodilation इधर भी ये vasodilation cause करेगा similarly in our liver which receptors are present yes that is beta 2 receptors what does beta 2 receptor do beta 2 receptor do they causes reverse hypoglycemia ये हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज कर देगा if we stimulate beta 2 receptor in liver now we see the classification of beta blockers so beta blockers are generally classified into three generation first generation second generation and third generation so first generation जो होती है आप ऐसा समझ लो they are our grandparents second generation are our parents and third generation we are okay अब हमारे grandparents कैसे होते हैं older ठीक है so first generation जो drug होगी वो कैसे होगी older and they are non selective drugs means they can act beta 1 as well as beta 2 receptor वो दोनों पे काम करेंगे so the drugs are propranolol timolol sotalol and pindolol okay अभी propranolol है it is the most asked drug in competitive exams okay and propranolol is also contraindicated in the patient of asthma and diabetes mellitus and timolol हम कहाँ यूज करते हैं in the treatment of glaucoma sotalol is a class 3 antiarrhythmic drug and then second generation beta blockers second generation beta blockers are cardioselectives means they only block beta 1 receptor वो खाली beta 1 receptor को block करेंगे and the drugs are metoprolol atenolol acebutolol bisoprolol and esmolol and third generation beta blockers कैसे होंगे means they block alpha blocking activity उनके पास alpha receptor को भी block करेंगे beta receptor को भी block करेंगे और उनके पास vasodilator की भी property होगी ठीक है ऐसे ड्रग्स कौन से होते हैं लेविटालॉल कार्बिडोलॉल सेलिप्रोलोल नेबिवोलोल एंड बिटेक्सोलोल एंड वी नो दैट नेबिवोलोल की एक और स्पेशल पॉइंट होता है दैट इट कॉजेस रिलीज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड ये नाइट्रिक ऑक्साइड का रिलीज करके क्या करेगा इट कॉजेस वेसोडाइलेशन ओके सिमिलरली this beta 2 receptor blocking drugs they are non-selective cardioselective that I already told you okay so these are the main classification of beta blockers now we see the uses of beta blockers so first we see the cardiac use of beta blockers so in cardiac use of beta blocker first it is used in the treatment of myocardial infarction second it is used in the treatment of hypertension third it is used in the treatment of angina fourth it is used in the treatment of congestive heart failure and fifth it is used in the treatment of arrhythmia and it is also used in the treatment of one disease condition like hyper obstructive cardiomyopathies okay we can use the beta blocker in these conditions now we see the non-cardiac uses of the beta blocker and we see by it we can remember it by the name mnemonic that is play the game okay play the game mnemonic से हम इसको याद कर सकते हैं so we see the non-cardiac uses of beta blockers so first it is used in performance anxiety
ठीक है, अगर एंजाइटी का पेशेंट हो देन वी कैन गिव फॉर प्रोफाइलैक्सिस बीटा ब्लॉकर. देन it is used in the treatment of thyrotoxicosis, it is used in the treatment of glaucoma, it is used in the treatment of akathisia, it is used in the treatment of, yes, migraine prophylaxis. So I have one question, that which beta blocker are used in the treatment of migraine prophylaxis? Yes, so our answer is propranolol. Propranolol is a drug of choice for migraine prophylaxis. Now, which beta blockers used in essential tremor? We can also use beta blockers in essential tremors also. Now we can now see the side effect and contraindication of beta blockers. So first we see, if we block beta 1 receptors too much, then what happen, and if we block beta 2 receptor then what happen. अगर हम बीटा 1 रिसेप्टर को ज्यादा ब्लॉक करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज द हार्ट रेट, मींस वो ऐसे नोड पे एक्टिविटी डिक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सिक्स साइनस सिंड्रोम, ऐसे नोड की एक्टिविटी बहुत ही डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है. सेकंड, इट ऑल्सो डिक्रीजेस द कंडक्शन, अगर कंडक्शन को डिक्रीज कर देगा उसकी वजह से क्या होगा, एवी नोडल ब्लॉक. थर्ड, इट डिक्रीजेस द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट, अगर कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट अगर अचानक से डिक्रीज कर देगा तो इसकी वजह से क्या होगा, एक्यूट कंजस्टिव हार्ट फेलियर. दैट्स व्हाई द पेशेंट ऑफ एक्यूट कंजस्टिव हार्ट फेलियर वी कैन नॉट गिव बीटा ब्लॉकर्स. ठीक है, हम उनको बीटा ब्लॉकर्स नहीं देते. सेकेंडली, बीटा 2 रिसेप्टर अगर को हम ज्यादा ब्लॉक करेंगे उसकी वजह से क्या होगा, जो जो ड्रग्स होते हैं लाइक प्रोप्रेनोलोल, नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, उनके मेजर ये साइड इफेक्ट्स है. ठीक है, it causes asthma, diabetes mellitus, peripheral vascular disease and variant angina. So the patient of asthma, diabetes mellitus, peripheral vascular disease and variant angina, we cannot give non-selective beta blockers like propranolol. Okay, so it is also most important MCQ. If you, this is all about the beta blocker. If you like this video, then please like my channel, subscribe it and share with your friends. Thank you.